we are almost done with fundamental rights, except for the last set of fundamental rights, that is right to constitutional remedies. Okay, so it's a very important fundamental right, because whatever we have studied so far, it is ineffective if there is no remedy before a court of law to enforce any of that. Okay, so this is why Dr. B.R. Ambedkar actually defined Article 32 as the heart and soul of the Constitution. Reason being कि अगर Article 32 नहीं होगा, so what is the point of so many fundamental rights? Like if there is nobody to enforce them, or if there's nobody to look into the violation of them, then the remaining fundamental rights are basically, defunct. So right to constitutional remedies, we have Article 32, which is the most important. Then we have Article 33, 34 and 35. ठीक है, इनका इतना काम नहीं आता है, आपको generally पता होना चाहिए कि 33, 34, 35 में क्या है. But out of them all, Article 32 is the most important one. Okay, it says remedies for enforcement of rights conferred by this part. ठीक है, अब 32, 1, 2, 3, 4 है, पहले bare act clear होना चाहिए, उसके बाद we look at the theory. Okay, so it essentially says that the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. Okay, अब इसमें क्या important है, वो ये बोल रहे हैं कि if anybody has to enforce their fundamental rights, then they have the right to move the Supreme Court. Okay, but how do they have that right? मतलब how can they do this? They can do this by appropriate proceedings. ठीक है, अब ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि appropriate proceedings का क्या मतलब होता है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि in different case laws the Supreme Court has evolved a much liberal meaning of what appropriate proceedings are. Okay, they have also relaxed the rule of locus standi कि कौन आके actually rights claim कर सकता है. ठीक है, so the whole concept of public interest litigation is because of that dilution of the concept of locus standi. Okay? And appropriate proceedings have also been diluted because the Supreme Court has basically left it to be interpreted very liberally. कि appropriate proceedings का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि you will have to go to the court and then file a petition in a particular manner. But अगर court को कहीं लगता है that any other suitable way can also be resorted to. For example, taking cognizance of a news report or taking cognizance of a letter which is written to the Supreme Court. So they have also been held to be appropriate proceedings. ठीक है, तो appropriate proceedings का ऐसा कोई technical meaning नहीं है. It basically implies that as long as nobody's fundamental rights are being violated, that kind of a proceedings will basically be used. Okay, then you have 32(2). ठीक है, very important again because it talks about कि what all remedies can the court give under Article 32. ठीक है, the Supreme Court shall have the power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of this. ठीक है, तो Supreme Court क्या क्या कर सकता है? It can give directions, orders या फिर writs. ठीक है, writs कितने टाइप के उन्होंने बताई हैं? They could be either habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. ठीक है, इन सब के मतलब हम पढ़ेंगे. I'm sure आपको वैसे भी पता होंगे because they're quite quite the ABCs of law when you actually start reading it. So we'll see what these writs mean. ठीक है, so whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. ठीक है, तो 32(1) बात करता है कि right to move to the Supreme Court is guaranteed for violation of fundamental rights. 32(2) बात करता है कि what kind of remedies can be given by the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights. Okay. 32(3) says, without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of his jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2. ठीक है, इतना relevant नहीं है क्योंकि इसका as such कोई practical application अभी तक we haven't seen in the form of a law, so it's not really that important. ठीक है, but वो in general क्या बोल रहे हैं
कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है क्लॉज 2 के अंदर, यानी कि डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स इशू करने की, अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ and empower any other court to exercise these powers which the Supreme Court exercises under clause 2. Okay, so as such there is no application of this, there's no example of it, so it's not that important. आपको बस authority याद रखनी है कि कौन कर सकता है. Okay, then you have 32(4) which is very important because it tells you the restrictions कि क्या आर्टिकल 32 पे कभी restrictions लग सकते हैं. ठीक है, so the right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this constitution. ठीक है, can you guys give me any example of when fundamental rights can be suspended under the constitution? Not just article 32 but in general. During emergencies. Correct, है ना? Not all kinds, although that's true, but हाँ, मतलब president may have the power to do that. Okay, so that is one. There are other restrictions also that we'll talk about. ठीक है, तो clause 4 बात करता है कि अगर 32 को suspend करना है तो that can only be done as per the procedure that is given under the constitution. Alright, so 32 as you can see is quite easy, and what you need to remember will be probably a few case laws, but in general cases का भी अब उतना नहीं है, because the whole concept of public interest litigation, locus standi, all of that has been very clearly laid down. ठीक है, फिर 33, 34, 35 एक बार देख लेते हैं, फिर we'll move on to the theory part of it. 33 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट की. ठीक है, कि इन केसेस में, ठीक है, इन जनरल जो भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं आपकी, ओके, या फिर कुछ और एजेंसीज विच आर इंडल्जिंग इन सच काइंड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस, तो उनके केस में एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी altered or it could be different than how it applies to civilians. ठीक है, तो 33 वही बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एटसेट्रा. ओके, सो जनरली उतना मतलब आपके काम का नहीं होगा, बिकॉज यू विल ओनली सी द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिकल 33. फॉर एग्जांपल जब भी परमानेंट कमीशन वाले केसेस आए थे, अगर आपने उनके बारे में सुना हो, देयर वाज Babita Punia versus Ministry of Defense, okay, and Lieutenant Colonel Nitisha versus Union of India. ठीक है, तो वहां पे जनरली आर्टिकल 33 का मेंशन था, बिकॉज आर्मी के जो रूल्स थे जिनको चैलेंज किया जा रहा था, which did not allow women to have women SSC officers to get permanent commission, they were being challenged. ठीक है, तो they were made under the power of article 33 only. ठीक है, आर्टिकल 33 बोलता है Parliament may by law determine to what extent any of the rights conferred by this part shall in their application to this be restricted or abrogated so as to ensure दो चीजें. ठीक है, one, proper discharge of their duties, and two, maintenance of discipline among them. ठीक है, so यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी याद रखना कि कौन कर सकता है. ठीक है, सो पार्लियामेंट कैन डू दैट बाय वे ऑफ अ लॉ. ठीक है, किस किस के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ फोर्सेस चार्ज्ड विथ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, or persons employed in any bureau or other organization established by the state for the purpose of intelligence or counterintelligence, or persons employed in or in connection with telecommunication system set up for any of the above purposes. ठीक है, as such उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. You can just remember कि it can be changed for army, navy and air force or even police, CBI, है ना, और जितनी भी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं etc. ओके, क्या क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड. नाउ फॉर व्हाट पर्पस? ठीक है, किस एम को अचीव करने के लिए? ऐसा तो है नहीं कि without any reason the fundamental rights should be taken away. Okay, there has to be some objective for which the fundamental rights are being altered for them. Okay, so दो functions के लिए आप कर सकते हो. पहला for the proper discharge of the duties and दूसरा for the maintenance of discipline among them. Okay, in fact Babita Punia के case में there was a discussion also, although the case did not
deal with the matter of application of 33 entirely. But वहाँ पे क्वेश्चन ये भी आया था in the arguments कि women are denied permanent commission. ठीक है, आर्मी में इनफैक्ट रूल्स भी हैं कि discriminatory provisions can be made for women etc. मतलब not exactly how I am saying it, but it does permit for discriminatory rules between men and women on the basis of gender. Okay, so the Supreme Court did talk briefly about this idea कि whether these gender discriminatory principles or provisions which are made under the law or under the rules or regulations, whether they are connected to these two objects. Okay, क्योंकि आप सिर्फ ये दो ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए ही फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आप आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वालिटी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो बाय allowing for gender discriminatory practices or recruitment rules, then are they in alignment with either of these two purposes? Okay, but as I said, that case is not an authority on this क्योंकि वो थोड़ा slightly different matter से deal कर रहे थे. So there were passing observations on it, but nothing too substantial. Okay, but आपको बस इतना याद रखना है कि Article 33 it basically talks about the power of Parliament to modify fundamental rights for the armed forces. Okay, 34 भी बहुत सिंपल है. 34 सिर्फ बात करता है मार्शल लॉ की. ठीक है, जनरली 34 से ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस इतना ही पूछा जाता है कि मार्शल लॉ कहाँ पे दिया हुआ है. तो द आंसर इज आर्टिकल 34. Okay, restriction on rights conferred by this part while martial law is in force in any area. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of the state, or any other person in respect of any act done by him in connection with maintenance or restoration of order in any area where martial law was in force, or validate any sentence, passed, punishment inflicted, forfeiture ordered, or other act done under martial law in such area. ठीक है, तो एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है. आ भी जाता है तो बहुत ही बेसिक सा आता है कि मार्शल लॉ के लिए कहाँ पे प्रोविजंस हैं. ठीक है, बट ऑल इन ऑल वो ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि दे कैन इंडेमनिफाई एनी पर्सन. इंडेमनिफाई मतलब दे कैन excuse them from being punished, okay, for something that they may have done in an area जहां पे martial law force में था. ठीक है, as long as their act was related with maintenance or restoration of order in that area, या फिर वो उन्होंने अगर कोई सेंटेंस वहां पे पास किया है, किसी को कोई पनिशमेंट दी है in that area, तो उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं. ठीक है, as such important नहीं है. So that there aren't any case laws or any such examples on this as well. Okay. Lastly, we come to Article 35, which is legislation to give effect to provisions of this part. ठीक है, अब this is also quite easy and not that important क्योंकि ये जब हमने बाकी fundamental rights पढ़े थे तब भी हमने देखा था कि Parliament is the body that makes the law. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं notwithstanding anything in this constitution, Parliament shall have and legislature of a state shall not have power to make these rules. ठीक है, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर इन चीजों के लिए लॉ नहीं बना सकती. द राइट अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन दीज केसेस इज द पार्लियामेंट. ठीक है, कौन से केसेस में? 16(3) के लिए. 16(3) अगर आपको याद हो वो बात करता था फॉर प्रोवाइडिंग फॉर रेसिडेंस इन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 16, क्योंकि 16(1) बोलता है कि आप रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. बट 16(3) बोलता है कि if parliament makes a law then that can be done. Okay, तो naturally parliament can make a law. ठीक है, अगर आपने बाकी fundamental rights ठीक से पढ़े तो you will remember possibly all this. 32(3) हमने जस्ट अभी पढ़ा, बात करता है कि किसी और कोर्ट को एम्पावर करना टू पास रिट्स एंड रेमेडीज अंडर 32(2). 33 बात करता है आपकी आर्मी नेवी व्हाटएवर वहां पे रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की. आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ की. ठीक है, तो ये सारे जो भी इनके जो लॉज बनेंगे वो पार्लियामेंट बनाएंगे. ठीक है, एंड एडिशनली फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंस अंडर दिस पार्ट. ओके, कैन यू गाइस क्विकली टेल मी, प्लीज टाइप इट आउट ऑफ द चैट बॉक्स, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स व्हिच मेक समथिंग एन ऑफेंस? ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. प्लीज टाइप इट आउट, डोंट
unmute yourself because I want everybody to answer this. Can you guys give me a few examples of fundamental rights which make something an offense? I want everybody to answer because you have read fundamental rights now. Okay, you should be able to answer this. Acha, give me only one example, not even more than one. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया हो. क्वेश्चन मेरा ये है कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या किसी चीज को ऑफेंस बना रहे हैं? ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट राइट्स को क्या राइट्स दे रहे हैं, बट आर दे मेकिंग समथिंग एन ऑफेंस? हाँ, राइट, ठीक है, कुछ लोगों के सही आंसर्स आए हैं. सी, इट्स अबाउट those fundamental rights which are prohibited something. अगर आपने वहां पे ध्यान से उनकी वर्डिंग्स पढ़ी हो तो you'll get to understand. ठीक है, जैसे untouchability is abolished, है ना, and its practice in any form is an offense punishable by law. Okay, so that is Article 17, which has made something an offense which is punishable under law. Okay. See, freedom of speech and expression, I understand what you're saying, but we are talking about कि fundamental rights किस चीज को offense बना रहे हैं. ठीक है, तो वो your answer that freedom of speech and expression also comes under this is not entirely true in this context. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जिन जिन चीजों को fundamental rights, ठीक है, under this part only जो offense बना है, ठीक है, so untouchability हो सकती है, फिर आपका आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ओके, जो भी चीजें जहां पे दे हैव मेड इट पनिशेबल. ओके, वी कैन आल्सो सी इट वंस सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैट. ठीक है, वो यहाँ पे आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं, दैट टेलिंग यू कि उन केसेस में जिनमें किसी चीज को ऑफेंस बनाया जा रहा है अंडर फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए जो लॉ बनाना है, ठीक है, that will be made by the parliament and not the state legislature. Okay, so that's the only purpose that we see. For example, Article 17, it says untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. ठीक है, enforcement of any disability shall be an offense punishable in accordance with law. Okay, so according to Article 35, ये जो law होगा ये parliament बनाएगी, ना कि state legislature. Okay, फिर देखते हैं और कहाँ पे इस टाइप किया they have used this kind of terminology. Okay, ठीक है, 23. Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law. ठीक है, तो यहाँ पे भी law parliament बनाएगी. Okay, अच्छा, 24 is not an offense because यहाँ पे they're just talking about a prohibition. Okay, so I think these are the ones which they are talking about. ठीक है, so 35 यही बोल रहा है कि parliament shall have and legislature of state shall not have power to make these laws, and parliament shall, as soon as may be after the commencement of this constitution, make laws for prescribing punishment for acts referred under clause 2. ठीक है, ये वाला उतना important नहीं है. It basically talks about continuation of laws कि constitution के आने के पहले जो laws इन areas से related force में थे इंडिया में, they will continue to be in force as per Article 372 until they are, you know, altered or repealed or amended by Parliament. ठीक है, तो continuation of laws वाला तो anyway we know कि जो भी laws pre independence era के थे, they are anyway continued because of Article 372. ठीक है, so that is essentially your right to constitutional remedies. ठीक है, ज्यादा questions इसमें से सिर्फ Article 32 पे आ सकते हैं, वो भी अपने आप में नहीं, मतलब it's not an independently sufficient article now for asking case laws because it's quite established और काफी easy jurisprudence है. Okay, so Article 32, right to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights. As I said, it's one of the highly cherished rights, and Dr. B.R. Ambedkar described it as a heart and soul of the Constitution. ठीक है, अब कुछ और keywords हैं जो MCQs में आ जाते हैं. For example, the cornerstone of the democratic edifice
is also used to refer to Article 32, and this was said in the case of Premchand Garg versus Excise Commissioner. Supreme Court को protector and guarantor of fundamental rights मानते हैं. क्यों मानते हैं? I hope you understand that anyway. Another important term that is used for the court in this context is sentinel on the QB. ठीक है, इसका essential literal मतलब ये होता है, sentinel is basically like a body, ठीक है, body which is on the alert or lookout. ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि who is sentinel on the QB, then the answer is the Supreme Court, because it is the protector of the Constitution and the fundamental rights. Okay. हाँ, ठीक है. अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि 32(1) के लिए appropriate proceedings are required. ठीक है, but appropriate proceedings क्या होंगी, that does not have a technical definition. ठीक है, so दरियाओ versus State of UP में कोर्ट ने यही बोला था that appropriate proceedings has reference to proceedings which may be deemed appropriate having regard to the nature of order, direction or writ sought. ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई एक फॉर्मेट नहीं है जिसको हम appropriate proceedings मानेंगे. ठीक है, दरियाओ में उन्होंने यही बोला कि it's a very subjective thing and it will depend on the nature of remedy that is being asked for in any given case. Okay. फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी कोर्ट ने यही बोला कि there is no straight jacket formula for what qualifies as an appropriate proceeding, because no rigid formula can be adopted, right? क्योंकि पूरा आइडिया ये था to make the courts accessible for the violation of fundamental rights. Okay, so if there is a very rigid or a very technical understanding is put for appropriate proceedings, then it will become very hard for people, especially the marginalized communities, to approach the Supreme Court for the violation of their fundamental rights. Okay. फिर कोर्ट ने इस केस में ये भी बोला कि even a letter addressed to the court can be an appropriate proceeding. ठीक है, इसको बोला जाता है epistolary proceeding या epistolary jurisdiction, जहां पे court takes cognizance on the basis of letters written to it. ठीक है, तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि what is epistolary jurisdiction, so you should know that. Okay. अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लोकस स्टैंडी की. ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई एम श्योर एवरीबॉडी ऑलरेडी नोज अबाउट दिस. लोकस स्टैंडी क्या होता है? लोकस स्टैंडी इज बेसिकली कि व्हाट इज योर स्टैंडिंग इन दिस केस. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सिविल केसेस में क्या होता है, यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट समबडी and not everybody, it's not a general right that is available to everyone. For example, if it is a contract and you are a party to it, then you are the one who can go to the court and file a case against it. Okay, me being a person who has no connection with that contract between you and some party, I cannot go to the court to get it enforced. ठीक है, तो लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि what is your standing. ठीक है, कि इस केस में आपका क्या स्टेक है, why should you be allowed to prosecute it or initiate it or whatever. Okay, तो जो rule of locus standi है, that has been diluted by public interest litigation. ठीक है, public interest litigation क्या है आप सबको पता होता है कि it is basically litigation by public spirited persons. ठीक है, मतलब कोई एनजीओ है या आप और मैं कोई भी जा सकता है to the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights of any other person also. ठीक है, तो उसमें हमारा कोई स्टेक नहीं है. And even then we would be allowed to start litigation on their behalf. So that is public interest litigation, because it is in the public interest, and that is why rule of locus standi has been diluted in the 1970s, in the 80s, and this is a great example of judicial activism. Okay, so according to the traditional rule of locus standi, the right to move the court is available only to those whose legal right or interest has been infringed. ठीक है, लेकिन इसको of course relax किया, because the idea was to make sure that everybody's fundamental rights are safeguarded. ठीक है, because a person who is uneducated or who is poor, they don't really have much understanding of what rights they possess. So it will be very unfair for the courts to have a very traditional understanding of locus standi, and this is why you see a lot of important litigation in the 70s and the 80s where a lot of important fundamental rights have been laid down. Okay? Particularly with respect to either bonded labor or rights of prisoners, or in general rights of fair trial. So this is why we have a lot of jurisprudence, and all of that is generally attributed to public interest litigations. Okay? India mein Justice P.N. Bhagwati is credited with the introduction of this concept. Okay?
एंड जनरली माना जाता है कि पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएस से बोरो किया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से। लैंडमार्क केसेस काफी सारे हैं, अभी हम और भी देखेंगे, बट देयर आर अ फ्यू। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दीज वर अ फ्यू ऑफ द अर्ली वंस। ओके, नाउ वी कम टू सम इंपॉर्टेंट PILs and some important fundamental rights that they clarified, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, हमने ऑलरेडी सारे केसेस पढ़ रखे होंगे। राइट ऑफ प्रिजनर्स एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट केसेस हैं DK बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल, शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ बॉन्डेड एंड चाइल्ड लेबर के ये हैं, एनवायरमेंट के ये हैं, ठीक है। हम इंडिविजुअली ने वैसे भी डील कर चुके हैं व्हेन वी वर डीलिंग विद स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स, बट यू कैन गो थ्रू दीज वंस फ्रॉम द PPTs। Okay. Now we come to the second important thing in Article 32, that is writs, ठीक है, कि writs का बेसिक मतलब क्या होता है। ओके, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली कभी कभी कुछ एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि किस रिट का क्या मतलब है, या कौन सी रिट किस चीज के अगेंस्ट अवेलेबल होती है, कौन सी रिट जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट है, क्वासी जुडिशियल के है, ठीक है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड। तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो होती है, दैट literally translates to you may have the body। okay, तो habeas corpus कब फाइल करते हैं, जब there is an illegal detention, ठीक है, to present the detained person before the court to make sure that the person is released from unlawful detention, writ of habeas corpus is used, ठीक है। अब writ of habeas corpus की एक खास बात ये है कि it can also be used against private persons, ठीक है। तो for example if a person is missing, तो उनके केस में भी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी फाइल्ड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इलीगल पुलिस कस्टडी ही हो तो ही रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल होगी। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा भी कई सारे केसेस में होता है जहां पे एन अडल्ट वुमन हैज married somebody outside her caste and the family does not like it, then they generally file a writ of habeas corpus saying that they can't find the daughter। okay, that is one classic example of that will be the case of this one, राइट टू मैरी का जो हमने केस पढ़ा था, द हादिया केस, है ना। उस केस में मैटर शुरू ही ऐसे हुआ था बिकॉज हादिया's father he went to the High Court of Kerala by writ of habeas corpus saying that he can't find his daughter, okay, but it was a case of a woman exercising her right to marry and other fundamental rights under Article 21। okay, but anyway, writ of habeas corpus means you may have the body, ठीक है, मतलब essentially you need to present the person who has been illegally or unlawfully detained, ठीक है। writ of mandamus पे आते हैं। writ of mandamus is also very common writ which is generally issued। this is the command by the court asking public authorities to perform their public duty, ठीक है, मतलब किसी पब्लिक बॉडी को कोर्ट कमांड करती है या फिर डायरेक्शन देती है टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, ठीक है। इट कुड बी इन एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोर्ट जाता है सेइंग दैट दे हैव बीन व्हाट डू यू कॉल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप लोग अभी क्लैट का एग्जाम देंगे, ठीक है। अब आपका रिजल्ट लेट्स से अगर गलती से दे हैव committed some error against your result and you go to the Supreme Court against whatever this particular thing, and then the court directs your CLAT consortium to rectify the error, okay, so they can issue a writ of mandamus। और भी कई सारे केसेस में writ of mandamus can be issued, ठीक है। कोर्ट ने अभी दोबारा reiterate किया because this is an established what do you call point of jurisprudence that courts cannot issue writ of mandamus for granting reservation, ठीक है। अभी रिसेंटली फरवरी में केस आया था जहां पे कोर्ट ने रीइटरेट किया। रीइटरेट इसलिए बिकॉज ये कई बारी और पहले भी वो बोल चुके हैं कि वी कैन नॉट डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू समबडी, ठीक है। अगर स्टेट की पॉलिसी नहीं है, द स्टेट हैज नॉट मेड द लॉज फॉर रिजर्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कास्ट, then the courts cannot issue a writ of mandamus to the state asking them to give this sort of reservation, ठीक है। तो कई सारे केसेस में कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि writ of mandamus किस केसेस में इशू की जा सकती है। ओके, देन वी हैव writ of prohibition and writ of certiorari, ठीक है। आप इन दोनों को साथ में ही पढ़ें क्योंकि ये दोनों writs जो हैं वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकती हैं, ठीक है। habeas corpus किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है, mandamus किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट हो सकती है, जुडिशरी के अगेंस्ट नहीं हो सकती है,
but prohibition and certiorari can be against judicial bodies also and quasi judicial bodies also. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना क्योंकि कई बार पूछते हैं. अब प्रोहिबिशन क्या करती है? प्रोहिबिशन में कोर्ट प्रिवेंट्स एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, तो ये ज्यूरिसडिक्शनल रिट है कि अगर सुपीरियर कोर्ट के पास मैटर जाता है कि जो नीचे वाले कोर्ट्स हैं दे आर एक्सीडिंग देयर ज्यूरिसडिक्शन, दे आर डूइंग समथिंग that does not fall within their jurisdiction, then the superior court can issue a writ of prohibition asking the inferior court to stop exceeding their jurisdiction. Okay, writ of certiorari on the other hand थोड़ी सी different है. यहाँ पे essentially writ कब issue होती है? when the lower court or when the lower tribunal has already issued something which is outside their jurisdiction. ठीक है, अगर वो already कोई decision दे चुके हैं, कोई order दे चुके हैं जिसको देने की उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, तो उस ऑर्डर को हायर कोर्ट्स क्वॉश करते हैं बाय वे ऑफ रिट ऑफ सर्टियोरारी. ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? दे आर प्रिवेंटिंग द लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग देयर ज्यूरिसडिक्शन. ओके, यहाँ पे द आइडिया इज that the order has already been made without jurisdiction and that is why the superior court is now going to quash it. Okay, so the difference is that writ of certiorari is issued after the completion of proceedings. ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ स्टेज का है कि किस स्टेज पे आप जा रहे हो, उस स्टेज पे डिपेंड करेगा कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन होगी कि रिट ऑफ सर्टियोरारी होगी. ओके, so these basic things you should remember. And lastly we have writ of quo warranto, which essentially means what is your authority. Okay, ये writ तब issue होती है when the holder of a public office is asked by the court to demonstrate why or under what authority he is holding that office. Okay, so it is to establish the right, what do you call, appointee to a particular office. ठीक है, ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ आई थिंक रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस ही है. बाकियों की आपको सिर्फ मीनिंग पता होने चाहिए. ऐसे आप उनका एप्लीकेशन उतना नहीं देखोगे जितना इन दोनों का देखोगे, रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस एंड रिट ऑफ मैंडेमस का. अब हम आते हैं एक और छोटे से टॉपिक पे विच इज रेस जुडिकाटा. ठीक है, कि क्या आर्टिकल 32 पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है. रेस जुडिकाटा का मतलब होता है दैट इफ फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑलरेडी गॉन टू अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू रजिस्टर योर केस. ठीक है, आपने अपना केस फाइल किया, कोर्ट ने आपका मैटर सुना और फिर कोर्ट ने उसको या तो डिसमिस कर दिया या आपके अगेंस्ट डिसीजन दिया या आपके फेवर में भी डिसीजन दिया. ठीक है, क्या आप दोबारा उसी बात पे वापस कोर्ट जा सकते हो? नहीं. ठीक है, दैट इज द होल प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कि आप सेम मैटर पे वापस दोबारा नहीं जा सकते हो. ठीक है, because once the judicial mind has been applied, once the courts have applied their judicial mind, once they have decided the outcome of a case, you cannot endlessly keep on going to that court or any other competent court for remedies. ठीक है, just because you don't like the remedy. तो res judicata के कई सारे functions होते हैं. ठीक है, the first and the most important is putting an end to the litigation. ठीक है, litigation can't be endless. Litigation has to stop at some point in time. ठीक है, और भी कई सारे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि आपने एक केस यहाँ रजिस्टर कर दिया, एक केस कहीं और रजिस्टर कर दिया. ठीक है, व्हाई? बिकॉज देन द टू आउटकम्स मे क्लैश विद ईच अदर. ओके, सो व्हाटएवर द एप्लीकेशंस ऑफ रेस जुडिकाटा इज, द क्वेश्चन नाउ कम्स इज कि क्या आर्टिकल 32 पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होती है. ठीक है, मतलब अगर आप एक बार आर्टिकल 32 के अंदर अगर चले गए तो डज दैट बार यू फ्रॉम गोइंग अंडर आर्टिकल 32 अगेन ऑन द सेम ग्राउंड्स. ठीक है, सेम ग्राउंड्स पे ऑफ कोर्स, नॉट ऑन लाइक अ न्यू ग्राउंड. ठीक है, तो दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने कहा था कि यस, रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू अ रिट पिटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 एज वेल. ओके, बस इसका एक एक्सेप्शन होता है कि रेस जुडिकाटा हीबियस कॉर्पस में अप्लाई नहीं होती. ठीक है, तो अगर आपने हीबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन फाइल करी है और वो कोर्ट ने डिसाइड कर दी इन व्हाटएवर मैनर, तो आप दोबारा सेम पर्सन के लिए हीबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हो. ओके, बाकी केसेस में if you have gone under article 32 then you cannot go under article 32 again on the same matter on the same grounds. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि what about 226 versus 32. ठीक है, अब 226 किस बारे में है? 226 is about the power of the high court. ठीक है, जो पावर हमने सुप्रीम कोर्ट की देखी अंडर आर्टिकल 32, similar power exists with article 226 as well. ठीक है,
ऑल्दो 226 की पावर इज वाइडर, क्योंकि 226 के अंदर आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए भी जा सकते हो और अदर मैटर्स के लिए भी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो। तो क्वेश्चन ये आता है कि इफ फॉर एग्जाम्पल you have already approached the High Court under Article 226, and let's say you have not gotten a favorable verdict under this article by the High Court, then can you go to the Supreme Court for the same matter again? ठीक है, तो इसका as such कोई yes और no answer नहीं है, ठीक है, वो केस टू केस डिपेंड करता है कि किस टाइप का मैटर है, एंड दैट इज हाउ द कोर्ट्स डिसाइड कि वेदर दिस हैज टू बी परमिटेड और नॉट, ठीक है। बट एज अ जनरल रूल, अगर हाई कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन ऑन मेरिट सुनी है, ठीक है, दे हैव heard your matter and they have applied the judicial mind and then they have given the verdict, ठीक है, as opposed to let's say just dismissing it in limine, okay, तो उस केस में it may act as restricting the remedy under Article 32, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट has sufficiently heard the matter under 226, then they may refuse to hear the matter again under Article 32. Okay? But as I said, this is not like a yes or no situation. It may totally depend on the facts and circumstances of the case. Okay? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव रेमेडी, ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इट मे हैपन दैट because any of your statutory right is being infringed, your fundamental right is also infringed, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कॉल फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर इफ यू हैव बीन अरेस्टेड फॉर मेकिंग सम पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, तो आपके पास रेमेडी है, आप आईटी एक्ट के अंदर ही जो प्रोसीजर दिया हुआ है अपील का या वट एवर प्रोसीजर इज देयर, यू कैन go through that, or you can approach the Supreme Court citing violation of Article 19(1)(a), which is your freedom of speech and expression, ठीक है। तो इस पार्ट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, ठीक है, तो विल दैट बार द रेमेडी अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, कि क्या कोर्ट्स ये बोल सकते हैं कि बिकॉज यू हैव एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी तो पहले आप जाके उसे परस्यू करो, and only then if it doesn't work you can come under Article 32, ठीक है। तो कोर्ट ने कई सारे केसेस में कहा है कि even though existence of adequate legal remedy has to be taken into account, this is not an absolute ground of refusing a writ under Article 32, ठीक है। तो even though existence of alternate remedy may be taken into account, मतलब कोर्ट उस बात को देख सकता है कि क्या वो रेमेडी इफेक्टिव है या नहीं, बट जनरली कोर्ट्स विल नॉट रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32 इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में अगर कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है तो दे मे डायरेक्ट द पार्टीज टू फर्स्ट रिजॉर्ट टू द ऑल्टरनेटिव रेमेडी, ओके। सो अगेन देयर इज नो येस और नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, टोटली डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। बट जिन केसेस में ऐसा एविडेंस होता है कि there is a strong presumption that a fundamental right has been infringed, that generally the courts will hear the matter under Article 32. So ideally existence of alternative remedy is not a bar on the writ of Article 32. Okay. So with this we come to the end of राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये एक लास्ट स्लाइड है कि सस्पेंड कब हो सकता है आर्टिकल 32 के राइट्स, तो कैन बी डन इन सिचुएशंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जो हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी देखेंगे, तो विल सी कि कौन कर सकता है और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 33 के केस में रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आर्टिकल 34 के केस में रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ओके। So with this we come to the conclusion of our discussion on fundamental rights. Now this was a very important discussion because kai sare cases you'll find under this head.